notes. I'm just waiting कि आपके पास जब नोट्स आएंगे तो आई कैन स्टार्ट गिविंग होमवर्क. चलो तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करा था, राइट. वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टू अप्रोचेस. एक लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच. बताइए फॉर्मूला क्या होगा. रिटर्न जब भी कैलकुलेट करेंगे सिंपल याद रखना है, रिटर्न डिवाइडेड बाय योर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल. तो रिटर्न लॉन्ग टर्म फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंटरप्रेट करेंगे. ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आरओई दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी. यहां पे भी फॉर्मूला सेम रहेगा, रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, बट रिटर्न ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा. अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. मैं पर्पसली ईएटी नहीं लिख रहा क्योंकि ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होएगा, राइट. डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड. ये हमने एक नया रेशियो डिस्कस करा था. एक और रेशियो हमने डिस्कस किया था, सेल्स टर्नओवर सॉरी एसेट टर्नओवर रेशियो. एसेट टर्नओवर रेशियो इज सिंपली कैलकुलेटेड एज सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट. ये रेशियो हमें हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड कि आपके एसेट्स कितने इफिशिएंटली यूज हो रहे हैं टू जनरेट योर सेल्स रेवेन्यू, राइट. सो हियर व्हेनेवर विल कैलकुलेट इन दिस रेशियो यू विल बी गेटिंग से 3 डिवाइडेड बाय 1. इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि जब भी आपने एसेट में 1 रुपए इन्वेस्ट करा है तो आप 3 रुपए सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो. 2 न्यू रेशियोज हमने डिस्कस किए थे. नाउ टेल मी व्हाट ऑल थिंग्स वी हैड कंप्लीटेड यस्टरडे रिलेटिंग टू दिस एग्जांपल. 2 ही वर्किंग कंप्लीट किया था क्या हमने. ऑपरेटिंग लेवरेज एंड इफ सेल्स ड्रॉप टू दिस ईबीआईटी लेवल क्या होगा. ये थर्ड वर्किंग कंप्लीट नहीं किया था हमने. ओके. व्हाट इज बीन गिवन. एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ईबीटी ऑफ फर्म विल इक्वल टू 0. आई गेस डिस्कस किया था हमने. डिस्कस किया था, लिखा था या नहीं लिखा था. लिखा नहीं था. इज इट रिक्वायर्ड टू डिस्कस इट अगेन. चलो विल राइट साइमल्टेनियसली, विल डिस्कस. तो राइट डाउन थर्ड वर्किंग. कैलकुलेशन ऑफ level of sales at which EBT will equal to 0. EBT will equal to 0. First we can write percentage fall in EBT to make it 0. Any number, if it has to reduce to 0, then percentage fall will be 100%. Combined leverage हमने कैलकुलेट किया था 1.4379 ना. जो चेक करो, फर्स्ट वर्किंग हमने कैलकुलेट किया था 1.4379. सो थर्ड, therefore परसेंटेज फॉल इन सेल्स डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें. डिवाइड करना होगा. अब ये डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कब करना है, कब डिवाइड करना है, इमीडिएटली स्ट्राइक नहीं होगा. तो बेस्ट वे गो विद द बेसिक्स. आपको इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी पता है. सेल्स ईबीटी कंबाइंड लेवरेज 1.4379 है. अगर सेल्स 1% से चेंज हो रहा है तो ईबीटी इज चेंजिंग बाय 1.4379. अब ईबीटी हमें 100% से चेंज करना है. सो व्हाट विल बी द proportionate change in sales. So simply cross multiply 100 into 1 divided by 1.4379. So I can write serial number first divided by second. 100 divided by 1.4379.
69.5458%. Therefore, new level of sales 75 lakhs minus 69.5458%. $22,84,065. लास्ट 2 डिजिट्स एग्जैक्ट नहीं आएगा क्योंकि राउंडिंग आउट डिफरेंस होगा, क्योंकि कंबाइंड लेवरेज हमने राउंड ऑफ करके लिया हुआ था 1.437 and there was some numbers up to 12 digits. हमने राउंड ऑफ करके लिया तो प्रिसाइजली ये नंबर मैच नहीं करेगा, बट मोटा मोटी 22,84,000 समथिंग समथिंग विल बी द आंसर. डन. चलिए, सो ये नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हमने आंसर कर. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो हियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड और इक्विटी फंड बताया नहीं, तो हम दोनों अप्रोच से कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो राइट डाउन फोर्थ वर्किंग. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI. इसमें फर्स्ट लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच ROI is equal to EBIT divided by टोटल कैपिटल और टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स लिखिए, टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स. So EBIT was 27 lakhs and लॉन्ग टर्म फंड्स कितना दिया है कंपनी में, ये देखिए, डेट 45 lakhs and equity 55 lakhs. So total long term funds employed in the company is 100 lakhs. Is it right? So 27 lakhs EBIT divided by 100 lakhs. So what is return generated on total capital? 27%. तो जो भी हमने फंड्स प्रोक्योर किया है, भले वो इक्विटी से हो या डिबेंचर से हो, ऑन ऑल फंड्स वी आर एबल टू जनरेट 27% रिटर्न. राइट, जस्ट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट बताइए, अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करूं तो विल इट रिमेन सेम 27%, विल इट बी हायर और विल इट बी लोअर? लोअर होगा, श्योर, या हायर होगा? हायर होगा. देखिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच हमने कैलकुलेट किया है 27%, यानी कि जो इक्विटी से पैसे प्रोक्योर किए कितना 55 lakhs, इस पे रिटर्न जनरेट हो रहा है 27%. डेट से जो हमने पैसे प्रोक्योर किया है 45 lakhs, इस पे भी हम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं 27%. नाउ व्हेन आई विल बी कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी विल इट बी हायर देन दिस और लोअर देन दिस? हायर. एंड व्हाट इज द रीजन? इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो बाय 9%. मींस when you are generating return on investment 27% and you are paying interest at the rate 9%, can we say the firm is favorably financially leveraged? So we are able to increase the return available to equity shareholders. So return on equity will be definitely higher, right? Debt holders का 45 lakhs लेकर के हम उन पे रिटर्न कितना जनरेट कर रहे हैं 27%, एंड उनको दे कितना रहे, सिर्फ 9% इंटरेस्ट दे रहे. सो विल बी एबल टू एड दैट balance amount to return on equity. Okay, so we'll calculate. So second working, write down equity shareholders fund. Equity shareholders fund. Equity shareholders fund approach we can write.
So return on equity is equal to earnings available to equity shareholders divided by equity shareholders fund into 100. तो हाउ मच वाज अर्निंग्स अवेलेबल, हमने फर्स्ट वर्किंग में कैलकुलेट किया था, देखिए 22,95,000. टैक्स रेट कुछ दिया नहीं है, राइट. सो जो ईबीटी था दैट ओनली वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड कितना है 55 lakhs ना, into 100. Is it coming to 41.72%? देखिए जब टोटल कैपिटल पे हम 27% रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो बिकॉज ऑफ लेवरेज वी आर एबल टू गिव हायर रिटर्न टू आवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट. इसीलिए जब आप बिजनेस कर रहे हो हमें ये मैनेज करना होगा कि इफ योर फर्म इज फेवरेबली फाइनेंशियल लेवरेज, डेट कंटेंट से फंड्स प्रोक्योर करना ऑलवेज एडवाइजेबल. अगर आपके पास लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलवेज इट इज एडवाइज दैट यूज मैक्सिमम पॉसिबल to the extent of your risk level, maximum possible debt content. You will be able to generate higher return to equity shareholder. Have you understood this? So this we have calculated. Now does firm have favorable financial leverage? Yes, क्योंकि रिटर्न जनरेट कर रहे टोटल फंड पे 27%, whereas debt holders को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं at 9%. हमने ऑलरेडी कल लिखा था ROC if it is greater than interest rate, we can say the firm is favorably financially leveraged. So you have to simply comment on this. So write down, because this is fifth working, na? Fifth point. The firm has favorable financial leverage. Next line. Return on investment using long-term fund approach is 27%, whereas interest rate is 9%. Therefore, firm is able to generate higher return than interest rate. वैसे यहां तक तो आंसर आपका कंप्लीट होता है, बट फर्दर विल राइट कि वी कैन ऑब्जर्व बिकॉज ऑफ योर फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, जब कंपनी कमा रहे टोटल फंड्स पे 27%, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम हायर रिटर्न दे रहे हैं. सो दैट ऑल्सो विल राइट. सो नेक्स्ट लाइन राइट डाउन. वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्व return on equity is 41.72%, which is more than return on total capital employed. जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो आपको पता है शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहे देयर आर टू एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस. आप में से कितने लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं? हार्डली इतना ही. हाँ, तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम फाइनेंशियल्स देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में जस्ट बेस्ड ऑन द ट्रेंड चार्ट्स के बेसिस पे एनालाइज करते हैं.
तो फंडामेंटल एनालिसिस में आपको यह भी देखना होगा कि कंपनी का आरओसी कितना है एंड आरओई कितना है। अगर कंपनी का आरओसी टोटल से 20% है एंड आरओई से 15% है, means company is not able to make a use of leverage properly. Okay, they are not able to generate higher return to equity shareholders. So that time you should be very cautious while investing in such companies. Okay, company का debt content यहाँ पे higher है, इसीलिए company equity shareholders को sufficient return generate नहीं कर पा रही. Okay, whereas say ROE is 25%, जैसे अपने एग्जांपल में अभी 27% and 41%, means company is able to use its debt content and leverage more properly. So definitely in such company you should be investing. Okay, चलो नेक्स्ट क्या हुआ, अब कमाओगे ना आर्टिकलशिप से। आर्टिकलशिप जैसे ही स्टार्ट करोगे यू कैन ओपन योर डीमॅट अकाउंट, ठीक आहे। 3000 मधनं 1000 खर्च काढला, 2000 तुम्ही महिन्याला सेव्हिंग करू शकता। बाकीचे काय खर्च करायचेच नाहीत ना आपण, काय किती रोज तर काय देणार नाही, राइट। सो यू कैन डू द सेविंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if firm belongs to an industry whose asset turnover ratio is 3, that is standard asset turnover ratio 3 been given, does it have high or low asset leverage? तो आपको इस कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है एंड देन विल कंपेयर विद दिस 3। ओके, तो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था, इट इज सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, राइट। चलिए लिखते हैं, 6th एसेट turnover ratio, but then being say CA students, finance students, आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में। सो डेफिनेटली इट इज एडवाइजेबल कि आप जब आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे यू शुड बी ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग, नॉट ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग अगर करोगे तो लॉस पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट अगर करोगे तो हाँ FNO कर डालो। फ्यूचर एंड ऑप्शन टोटल गैम्बलिंग होता है, हाँ तो कर सकते हो। चलिए तो बताइए फॉर्मूला क्या था, राइट डाउन द फॉर्मूला, सेल्स टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, सेल्स टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। बताइए आंसर। हाँ, सेल्स टर्नओवर बेसिक वाला दिया है ना क्वेश्चन में, 75 लाख। कितना आ रहा है, 75 लाख या 75, कैसे सेल्स या 75, टोटल एसेट्स कितने हैं? आपने वो डॉक्यूमेंट देखा है जिसमें एक साइड हम लाइबिलिटीज लिखते हैं, एक साइड एसेट लिखते हैं, हाँ उसको बैलेंस शीट कहते हैं। एंड नॉर्मली वो बैलेंस शीट टैली होता है, बराबर। तो आपको दिया है लॉन्ग टर्म फंड्स इक्विटी 55 लाख एंड लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है 45 लाख, सो टोटल हैज टू बी 100 लाख। तो टोटल एसेट्स भी यहाँ पे 100 लाख होना चाहिए, इज इट राइट? तो टोटल एसेट दिया नहीं है, बट देन यू ऑलरेडी नो लॉन्ग टर्म फंड्स, एंड यहाँ पे अगर आप करंट लाइबिलिटीज लिखते हो तो आई कैन राइट ईयर टोटल फिक्स एसेट्स, current assets minus current liabilities, that is working capital, so this total will be 100 lakhs. So total assets directly is not been given, but total of liabilities is been given to you, right? So you can write 75 lakhs divided by 100 lakhs, 0.75, just right side लिखिए, total asset is equal to total liabilities, that is 45 lakhs plus 55 lakhs, 100 lakhs.
0.75। अब देखिए इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में अपनी कंपनी बिलोंग कर रही है वहां पे स्टैंडर्ड एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है 3। मतलब इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज है उसमें अगर ₹1 एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कंपनीज कितना सेल्स टर्नओवर जनरेट कर रही है ₹3। एंड अपनी कंपनी ₹1 में एसेट इन्वेस्ट करने के बाद कितना जनरेट कर रही है 0.75। सो कंपनी का एसेट यूटिलाइजेशन इज नॉट एट ऑल प्रॉपर, इट इज लो और वी कैन से वेरी लो एसेट लेवरेज और एसेट टर्नओवर। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे डज इट हैव हाई और लो एसेट लेवरेज। तो कैन वी राइट, चलो सो राइट डाउन नोट। Asset turnover ratio, first note, asset turnover ratio indicates efficiency in utilization of assets. Second point, the firm's asset turnover ratio is 0.75, which is lower than industry standard asset turnover ratio, that is 3. Therefore, firm has low asset leverage. लो एसेट लेवरेज को अंडरलाइन करेंगे। It indicates that firm is not able to utilize its assets efficiently as industry. Done. So with this we have completed with the 10th example. बस इतना ही था इस एग्जाम्पल में। Still to write, right. क्या हुआ? Any issue? Written? चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है 16th is an exam question, but the thing is that in this question the question was been asked on one concept called as beta. वैसे बीटा डिटेल में आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बीटा पे नोट भी पूछी गई है, तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे बीटा रखा हुआ है। ये बीटा जो चैप्टर है सीए फाइनल का पार्ट है। कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए ऑलमोस्ट एक लेक्चर लगता था मुझे ये कंसेप्ट बीटा के लिए, पहले जब मैं सीए फाइनल के लेक्चर्स लेता था, क्लास लेता था फाइनेंस मैनेजमेंट का। अब ये क्योंकि आपके डिटेल्ड सिलेबस का पार्ट नहीं है, विल बी ऑल्सो कीपिंग इट इंट्रोडक्टरी लेवल, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रीफली, राइट। हैव यू एवर हर्ड बीटा? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये अल्फा गैमा बीटा नहीं, फाइनेंस की टर्म्स में बेटा। जब भी हम अगेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आप फाइनेंशियल एनालिसिस करोगे, कंपनी का बीटा आपको देखना होगा। लास्ट जब हमने टाटा मोटर्स का फाइनेंशियल देखा था तो उसमें बीटा था, कंपनी का बीटा कुछ तो 3 था। ओके, नहीं बाद में देखेंगे, पहले कंसेप्ट समझते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि
ये वैसे बीटा जो चैप्टर है सीए फाइनल का सिलेबस एक पूरा चैप्टर है एक्चुअल में बीटा में, ठीक है। एंड जो आपने सीए फाउंडेशन में सीखा था मैथ्स में, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कोवैरियंस, ये आएगा सब बीटा में, ठीक है। जो फॉर्मूला कैलकुलेशन है वो उस पर डिपेंडेंट है टू सम एक्सटेंट, ओके। यहाँ पे इंटर लेवल पे कैलकुलेशन वगैरह पार्ट नहीं है, जस्ट हमें कंसेप्ट समझना है। एटलीस्ट इंटर तरी वाचल फाइनल से फाइनल ला इतना डिटेल में नहीं है लेकिन कोवैरियंस वगैरह, बट देन फॉर्मूला आर बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट ओनली, ओके। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट कंसेप्ट बीटा, फर्स्ट टेल मी whenever you will be investing in stock market, से आपने आर्टिकलशिप से 1 लाख रुपए सेव करा है and नहीं इनकम पण तेवढा होणार नाही ती गोष्ट वेगळी, बट देन चलो सीए होने के बाद सेव किया आपने, ओके, फर्स्ट 1 मंथ में, ओके। अब आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है पर्टिकुलर शेयर में। बताइए शेयर में जब इन्वेस्ट करेंगे इज देयर अ रिस्क इन्वॉल्व इन दिस? व्हाट डू यू मीन बाय रिस्क इन इट? नहीं, लेवरेज नहीं, सिंपल टर्म्स है, प्रैक्टिकल टर्म्स में जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे तो इज देयर रिस्क इन इट? व्हाट वी कंसिडर एज अ रिस्क फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू? सपोज आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करना है एक पर्टिकुलर शेयर में, अनसर्टेनिटी इन मार्केट सिचुएशन एंड दैट विल रिलेट विद द प्राइस ऑफ द शेयर ओनली। अनसर्टेनिटी अल्टीमेटली हम प्राइस पे ही कंसिडर करते हैं, राइट। सो जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, वी कंसिडर द रिस्क फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एक्चुअल रिटर्न एंड व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड मे बी डिफरेंट, राइट। से आज आपने एक पर्टिकुलर शेयर परचेज किया है 100 रुपीज में, आपका टारगेट था 140 होना चाहिए, ओके। मींस यू आर एक्सपेक्टिंग 40% रिटर्न। हो सकता है कि एक्चुअल में जो टाइम फ्रेम था आपका उसमें 105 हुआ है, मींस एक्चुअली यू विल एंड अप गेटिंग ओनली 5% रिटर्न, राइट। लॉस हुआ नहीं है लेकिन आपका एक्सपेक्टेड था 40% एंड एक्चुअल रिटर्न इज 5%। कैन वी कॉल दिस एज रिस्क? डेफिनेटली यस। व्हाट एक्चुअली return is generated and what expectations were there as an investor, if there is a difference in it then we can call it as risk. Obviously on the negative side, suppose आप expect कर रहे थे 140 and actual market में price हुआ 180, मतलब 80% रिटर्न दिया है, तो जो आपका एक्सपेक्टेशन था उससे हायर मिला है तो क्या उसको रिस्क कहेंगे? नहीं। जब नेगेटिव साइड में हो तो उसको रिस्क कहेंगे, राइट। तो फाइनेंस में when we are considering from the point of view of investment, risk is been defined as difference between actual outcome and expected outcome, that is called as risk, okay. Now tell me risk measure कैसे करें? जब शेयर्स में हम कह रहे हैं कि रिस्क है, एक्चुअल आउटकम एंड एक्सपेक्टेड आउटकम में डिफरेंस होगा, तो हाउ डू वी मेजर द रिस्क? बीटा नहीं, बीटा तो मेजर ऑफ रिस्क है लेकिन वी हैव टू कम टू दैट पार्ट लेटर ऑन। नहीं, leverage deals with the risk which is generated because of your operating fixed cost और financial fixed cost। यहां पे मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूं, शेयर मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूं। हाउ विल यू मेजर द रिस्क? पहले तो रिस्क मतलब क्या? यहां पे अगेन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो एक्चुअल आ रहा है उसमें डिफरेंस है, बराबर। सीए फाउंडेशन में हमने स्टडी करा था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब डिस्पर्शन में कौन से मेजर्स आपने डिस्कस किया था? अब जो मेरे साथ थे एटलीस्ट वो तो बताइए। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड रेंज, ये 4 थे, राइट। इसमें से बेस्ट मेजर कौन सा था? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में मेजर क्या कर रहे थे हम? फॉर्मूला तो ठीक है, चलो फॉर्मूला भूल जाओ, यहां पे कैलकुलेट करना नहीं, लेकिन मेजर क्या कर रहे थे हम? डेविएशन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू, डेविएशन फ्रॉम वैरिएंस कुछ तो नया लेकर के आए। डेविएशन फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू ना, नॉर्मली जब हम डेटा रिप्रेजेंट करते हैं वी आर रिप्रेजेंटिंग विथ वन सेंट्रल वैल्यू। याद है वो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, आपको क्रिकेट टीम 2 प्लेयर सिलेक्ट करना है, देन 2 प्लेयर्स एक्स वाई, एक ने स्कोर किया था 50 50 50, इसका एवरेज सेंट्रल वैल्यू 50, अनदर प्लेयर 100 0 70 30 एंड 50, इसका एवरेज 50, दोनों का एवरेज 50 50 है। कौन से प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे, एक्स और वाई? एक्स वाई, बिकॉज इज मोर कंसिस्टेंट। एंड वाई कैन वी से सेंट्रल वैल्यू से
deviation higher side and lower side, it is very high, right? तो सेंट्रल वैल्यू से स्कैटर्डनेस और डेविएशन इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. इसका एवरेज डेविएशन हमने मेजर करा था. अब वो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए वो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था. अब उतने डिटेल में नहीं जाएंगे. इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमने कंसेप्ट डिस्कस किया था, दैट टाइम आई हैड टेकन द एग्जांपल ऑफ टाटा कंपनी एंड रिलायंस कंपनी. दोनों का रिटर्न हमने कंसिडर करा था. आई डू रिमेंबर द एग्जांपल, क्योंकि हर टाइम मैं वही एग्जांपल लेता हूँ. तो यहां पे टाटा कंपनी सपोज रिटर्न जनरेटिंग इज 19, 20, 21, 20, 20. एवरेज रिटर्न कितना है? 20%. रिलायंस का से 30, 10, 0, 40, 20. एवरेज यहां पे भी 20%. कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? क्योंकि कंसिस्टेंट है. कैन वी से सेंट्रल वैल्यू से रिलायंस का स्कैटर्डनेस ज्यादा है, राइट? तो यहां पे आपका एक्सपेक्टेशन था से 20, एक्चुअल रिटर्न मे बी 30 और इट मे कम डाउन टू 10 ऑल्सो, राइट? So whenever we are measuring the deviation from your expectation, we call it as standard deviation. So here also, when we are investing in stock market, say share, so there is a risk involved, and that risk is measured by standard deviation, which is denoted by the symbol sigma, right? So shares में total risk is measured by standard deviation. Okay? मतलब जो आपका actual return and expected return का deviation, उसका average. Okay? Now this risk we can divide into two parts. एक होता है divisible risk और diversifiable risk. This seems to be more better. Diversifiable risk and another is non-diversifiable risk, और इसको सिस्टमेटिक रिस्क भी कहते हैं. वो तो बाद में देखते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिफाइबल रिस्क? वो रिस्क जो हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, बराबर. मींस कैन वी से कि जो इन्वेस्ट करना है, अगर मैंने मल्टीपल शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो मैं रिस्क कम कर सकता हूं. इज इट राइट? सपोज आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था. इज इट एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन वन कंपनी टोटल 1 लाख, और से 10,000 या 5,000 20 कंपनीज में इन्वेस्ट करें? 5,000 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे. रीजन बीइंग, अगर आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल सपोज आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज में टोटल 1 लाख इन्वेस्ट किया है. ऐसी कोई अगर इवेंट हो रही है जिसका इंपैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे इंपैक्ट हो रहा है. एक्चुअल में वो न्यूज आई थी बीच में कि मुकेश अंबानी हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड और डिसीज का कुछ रूमर आया था. एंड आफ्टर दैट रूमर इमीडिएटली स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ऑलमोस्ट 10-15% से नीचे भी आया था, राइट? सो व्हेनेवर एक पर्टिकुलर इवेंट हो रही है, और व्हेन धीरूभाई अंबानी पास्ड अवे, दैट टाइम रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स ड्रास्टिकली नीचे आए थे, राइट? तो ये जो इवेंट हो रही है ये सारे कंपनीज को इंपैक्ट करेगी या वन पर्टिकुलर कंपनी को इंपैक्ट करेगी? वन पर्टिकुलर कंपनी को इंपैक्ट करेगी. अगर आपने 1 लाख रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया रहता एंड ऐसी कोई इवेंट हो रही है जिसका इंपैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज पे हो रहा है, से 40% शेयर्स नीचे आ रहा है, तो कहना है सर टोटल पोर्टफोलियो आपका 40% नीचे आएगा, 40,000 का लॉस होगा, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी, सपोज आपने 5-5 हजार के 20 कंपनीज में इन्वेस्ट किया रहता, एंड ऐसे अगर इवेंट होती है तो ओनली रिस्क एक्सपोज विल बी ऑन दिस 5,000, रिमेनिंग 95,000 पे तो आप प्रॉफिट अर्न करोगे. इज इट राइट? सो कैन वी से such event is called as the risk exposed because of such event is called as diversifiable risk, right? So here risk can be reduced, we can say, by diversifying in multiple number of shares. Is it right? Now there are some risk involved which cannot be diversified. जैसे for example, अगर war होता है, ये बीटा कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था सीए फाउंडेशन में, याद है? कहां पे डिस्कस किया था? बीसी के चैप्टर नंबर 6 में टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया था हमने. अननेसेसरी अगेन वो आपस में डिस्कस कर रहा हूं. हाँ, चलो डिस्कस करते हैं, बेटर कंप्लीट करते हैं. हाँ, अगर इलेक्शन में बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आती है या कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आती है, उसका इंपैक्ट डेफिनेटली स्टॉक मार्केट पे होगा. या वॉर आता है, वॉर होता है सपोज, तो क्या उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे होगा? कोविड-19 के टाइम क्या उसका इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे हुआ था? डेफिनेटली.
तो ये जो इवेंट्स हो रहे हैं क्या एक पर्टिकुलर कंपनी को इंपैक्ट करेगा, सारे शेयर्स को इंपैक्ट करेंगे, सारे कंपनीज को इंपैक्ट करेंगे? तो यहां पे अगर मैंने डाइवर्सिफाई भी किया रहता तो क्या मेरा टोटल पोर्टफोलियो वुड हैव बीन एक्सपोज्ड टू दैट रिस्क, राइट? तो सम इवेंट्स कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड, ओके? तो देयर इज वन मॉडल कॉल्ड एज CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एक थ्योरी है. एज पर CAPM मॉडल, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क इज मेजर्ड बाय बीटा. दिस पार्ट जो टोटल रिस्क का एक पार्ट है जो हम मिनिमाइज नहीं कर सकते और डाइवर्सिफाई करके रिड्यूस नहीं कर सकते, दैट रिस्क इज मेजर्ड बाय बीटा. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो ये जो बीटा कंसेप्ट है दैट इज बीन गिवन इन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. ओके, एंड व्हेन दिस बीटा इज कैलकुलेटेड, से वैसे फॉर्मूला इसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. Okay, so timing I'll ignore this correlation coefficient. So here can we say simply it is a ratio between the total risk of the company and total risk of the market, right? Say we are talking of Reliance Industries which is say listed in Bombay Stock Exchange. तो overall market का भी एक risk होगा क्योंकि जो कंसोलिडेट सारे कंपनीज के शेयर्स हम एवरेज आउट करेंगे तो देयर विल बी अ वोलेटिलिटी इन दैट आल्सो, राइट? सपोज ये जो रिस्क है टोटल मार्केट रिस्क, दिस वी आर कंसिडरिंग से 10%, एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो रिस्क है दैट इज 20%, मतलब सेंट्रल वैल्यू से डेविएशन रिलायंस इंडस्ट्रीज का कितना है 20% एंड ओवरऑल मार्केट का कितना है 10%. तो कैन वी से इट इज ट्वाइस रिस्कियर देन मार्केट रिस्क, इज इट राइट? तो बीटा ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बी 2. So whenever I am calculating beta, I am calculating in comparison with market. That is a relative measure in comparison with market. So अगर किसी कंपनी का बीटा 2 है, it means this company is twice riskier than the overall market in which it is listed. Okay? और से टाटा कंपनी, सपोज इस कंपनी का बीटा है से 0.50, जस्ट हाइपोथेटिकल, आई डोंट नो, चेक करते हैं. तो यहां पे कैन वी से दिस टाटा कंपनी इज हाफ रिस्कियर देन द मार्केट रिस्क? कंपनी ने ज्यादा रिस्क नहीं लिया यहां पे. हैव यू अंडरस्टूड दिस? अब रिस्क जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से डिपेंड करेगा. ओके, व्हेन वी आर कंसीडरिंग द टोटल मार्केट, तो रिस्क जो है आपका ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट या फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज लेवरेज की वजह से भी होगा. देन हाउ द कंपनीज मैनेजमेंट स्टाइल की वजह से भी होगा. सम कंपनीज माइट बी टेकिंग वेरी हार्श डिसीजन, सम कंपनीज आर गोइंग विद द वेरी सेफर डिसीजंस. तो ये छोटे छोटे डिसीजंस ओवरऑल रिस्क पे इंपैक्ट करेंगे. ओके, तो रिस्क का एक पार्ट था ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज. ओके, सो ये जो टोटल नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है दैट इज बीन मेजर्ड बाय बीटा. एंड व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग, कैलकुलेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जो नंबर आप कैलकुलेट करोगे उसका सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज इन रिलेशन विद द मार्केट रिस्क. तो मार्केट का बीटा क्या होगा? मार्केट बीटा इज कंसिडर्ड टू बी ऑलवेज 1. Okay, so therefore we can say एक कंपनी का बीटा अगर 2 है, it is twice than the market risk. Beta is always a relative measure. Okay, I don't remember कि हमने वो बीटा वहां पे देखा था. We'll check still. टाटा मोटर्स का देखा था ना हमने. क्या होगा इसको? नेट तो है. नेट है ना? ऐड ही आ रही है, जो काम का है वो नहीं आ रहा. डायरेक्टली देखते हैं.
Can you see this company beta? 0.97. What do you infer from this? This company is having a very similar risk to what market risk is there. मतलब market risk के comparison में, market risk मतलब overall average risk के comparison में ये company का ज़्यादा risk नहीं है. So definitely you can invest in this company. And then several factors what we have seen at that time कि company का पहले debt content बहुत ज़्यादा था, अब debt content कम है. So because of its operating and financial leverage has reduced, we can say beta has also reduced. Have you understood conceptually what do you mean by beta? ठीक. Now tell me ये बीटा के ऊपर ये जो हमने डिस्कस किया था लिखना है या नहीं लिखना है? लिख के रखिए, नुकसान तो नहीं होगा. कंसेप्ट इफ यू आर हैविंग अ नॉलेज ऑफ इट तो इट इज ऑलवेज बेटर. ओके, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था इसलिए लिख रहा हूं. ओके, डिटेल में कंसेप्ट आप सीए फाइनल में स्टडी करोगे. राइट डाउन एट द सेंटर रिस्क. Measured by standard deviation. In some paragraph of your module ये डाइवर्सिफाइबल रिस्क एंड नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क का भी रेफरेंस है. सो इट वुड बी बेटर यहाँ पे अगर लिख रखोगे तो लेटर ऑन जब आप रीड करेंगे दैट टाइम यू विल बी एबल टू रिलेट इट प्रॉपरली. ओके, करेंगे ना रीड? राइट डाउन ऑन द लेफ्ट साइड डाइवर्सिफाइबल रिस्क. तो एट मेनी प्लेसेस इन योर मॉड्यूल इट इज बीन गिवन. इसको हम कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क. आपके मॉड्यूल में बहुत जगह ये वर्ड यूज किया है, अनसिस्टमेटिक रिस्क. तो अनसिस्टमेटिक रिस्क का मीनिंग है डाइवर्सिफाइबल रिस्क. And right hand side non diversifiable risk. इसका हम कहते हैं सिस्टमेटिक रिस्क. below this write down any events that affect specific company or industry. Example, death of key managerial personnel, or say labor strike इन कंपनी, मतलब अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज या लेबर ने स्ट्राइक किया है एक्सेट्रा. इसके नीचे लिखिए एज पर CAPM. CAPM का फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लीजिए कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. एज पर CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, this risk can be minimized by diversification in investment. As per CAPM, this risk can be minimized by diversification in investment. Written full stop. Now below this non-diversifiable risk. Any event that affects
all the companies in country. Any event that affects all the companies in country. नेक्स्ट लाइन, और इसी में एग्जाम्पल, वॉर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस एक्सेट्रा. मेजरली ऑल कंपनीज पे इंपैक्ट होगा इसका. This risk cannot be minimized by diversification. This risk cannot be minimized by diversification. And this risk is measured by beta. Beta is relative measure. एक होता है एब्सोल्यूट मेजर एंड एक होता है रिलेटिव मेजर. याद है सीए फाउंडेशन में एब्सोल्यूट मेजर इज द एक्चुअल मेजर एंड रिलेटिव मेजर मींस इन कंपैरिजन विद. ओके, so beta is a relative measure of risk, that is it measures risk in comparison with market risk. Market beta is always 1. स्टॉक मार्केट जिसमें वो कंपनी लिस्टेड है उसका बीटा हमेशा हम 1 कंसिडर करते हैं. एन एग्जांपल लिखिए. इफ बीटा ऑफ कंपनी इज से 2, it implies that company is twice risky. Company is twice risky as compared to market risk. If beta of the company is say 2, it implies that the company is twice risky as compared to market risk. So this was small discussion on beta. Okay, डिटेल में आप सीए फाइनल में स्टडी करोगे. स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट है, वहां पे आप कोर में फाइनेंस रिलेटेड इन द सेंस स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंसेप्ट स्टडी करोगे. ओके, चलो कैन वी प्रोसीड नाउ. कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, यहां पे देखिए देयर आर डिफरेंट कंपनीज एंड हर कंपनी का बीटा दिया हुआ है. ओके, सो हाईएस्ट बीटा किसका है? सुजाता लिमिटेड. एंड लोवेस्ट बीटा है ऐश्वर्या लिमिटेड. तो जब हम कैलकुलेट करेंगे इस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज भी हाईएस्ट होगा एंड इस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज लोवेस्ट होगा. ओके, एंड दैट वी हैव टू एक्सप्लेन बाय कमेंट. यूज ऑपरेटिंग लेवरेज टू एक्सप्लेन why this company are having different beta. So you have to relate कि operating leverage भी risk की measure करता है and beta is also measuring risk. So therefore based on the operating leverage the company are having different beta, that we have to write a note. Okay, तो operating leverage calculate कैसे करें? पहले आपको दिया percentage change in revenue divided by percentage change in operating profit. What is the formula for operating leverage? Percentage change in EBIT divided by percentage change in sales. So by using that formula we can calculate operating leverage and then we can write comment. Okay, चलिए
So write down now example number 16. First working, calculation of operating leverage. Write down the formula. Operating leverage is calculated as percentage change in operating profit, that is EBIT, divided by percentage change in sales. So जो कॉलम्स दिया हुआ है वो कॉलम्स लिखते हैं. फर्स्ट कॉलम फर्म, परसेंटेज चेंज इन EBIT, percentage change in sales, and operating leverage. Write down the companies. हाँ, बस इतना ही लिखा था हमने. ऐश्वर्या लिमिटेड, कौन है? तब्बू लिमिटेड, महिमा लिमिटेड एंड सुजाता लिमिटेड. परसेंटेज चेंज इन EBIT. अब यहां पे EBIT दिया है. सो 25, 32, 36 एंड 40. 25%, 32%, 36% and 40%. And percentage change in sales 27%, 25%, 23% and 21%. Now you can calculate. So 25 upon 27, 0.93, 1.28, 1.57 and 40 divided by 21, 1.90. Written. You can see ऑपरेटिंग लेवरेज कौन से कंपनी का हाईएस्ट है? सुजाता लिमिटेड. एंड बीटा ऑफ दिस कंपनी वाज आल्सो हाईएस्ट. ऑपरेटिंग लेवरेज कौन से कंपनी का लोवेस्ट है? ऐश्वर्या लिमिटेड. तो बीटा ऑफ दिस आल्सो कंपनी इज लोवेस्ट. डन. तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन, calculate degree of operating leverage which we have done of each of this firm and comment also. So operating leverage पे पहले comment करना है and then based on the operating leverage why the company are having different beta वो भी comment करना है. तो पहले comment करना है आपको operating leverage. So write down below this, comment on operating leverage. Write down operating leverage of Sujata Limited is highest whereas that of Aishwarya Limited is lowest. It indicates operating risk of
Sujata Limited is highest and operating risk of Aishwarya Limited is lowest. And next line, operating risk of other firms is moderate. Operating risk of other firms is moderate. other जो दो कंपनी है उनका written, and then leave one line blank and write down note on beta. इसमें फर्स्ट पॉइंट रहता हूं, बीटा इज मेजर ऑफ रिस्क. It is relative measure it means beta measures riskiness of asset or share in relation to market. Full stop. Higher beta is indicator of higher risk. Higher beta is indicator of higher risk. Full stop. Beta is affected by several factors. Beta is affected by several factors like operating and financial leverage, revenue cycle, government policy, etc. Beta is affected by several factors like operating and financial leverage, revenue cycle, government policy, etc. Next line. Second point, operating leverage is also indicator of risk. Operating leverage is also indicator of operating risk right now. Operating risk. If operating leverage of company is high, then beta of that company will be also high. Will be also high. Third point, we can observe that in given example, operating leverage of Sujata Limited is highest. Thus,
beta of Sujata Limited is also highest. Similarly, beta of Aishwarya Limited is lowest because operating leverage of that company is lowest. Operating leverage of that company is lowest. Full stop. बस इतना लिखना है आपको. इसी के साथ वैसे तो सारे कॉन्सेप्ट्स अपने कंप्लीट होते हैं. अब कोई कंसेप्ट नहीं है. अब एग्जाम्पल ही प्रैक्टिस करना है. कंक्लूड नहीं कर रहे. डन. चलो, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका. लिखना है. रीड 6th question. Done. Read 6th question. Mark this question as very important. Many times simple question है, but many times exam में similar question has been asked almost for 3 to 4 times, just with slight variation in the number. ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है. रीड. Can I scroll down? And also you have to comment. Repeated number of times this question has been asked. Can you see very simple example? 1 lakh sales volume, 1,20,000 sales volume. इस पे आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो वी कैन कैलकुलेट टोटल सेल्स. वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, सो वी कैन कैलकुलेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस. यू विल बी गेटिंग ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट के लिए दिया हुआ है, तो ईबीडी टैक्स रेट इज ऑल्सो बीन गिवन 35%. सो ईएटी प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं है, तो दिस इटसेल्फ इज अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स. यू विल बी गेटिंग ईपीएस. And then at 1 lakh and 1,20,000 units, you can just compare EPS and calculate percentage increase. And then you can calculate operating as well as financial leverage by just applying the formula. Okay. बताइए 1 lakh unit and 1,20,000 unit operating leverage lower कहाँ पे होगा? 1 lakh पे या 120 पे? 120 पे ना. जैसे जैसे आपका सेल्स राइज हो रहा है, ऑपरेटिंग रिस्क रिड्यूस हो रहा है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज विल कम डाउन. This is what we have to write in the comment. Same applies for financial leverage. Can we write down? चलिए. Question number 6. When you are writing, write down very important. Heading लिखिए calculation of EPS, operating leverage and financial leverage. Serial number, particular sales volume in it 2 columns, 1 lakh units and 1,20,000 units. Just a second.
So write down sales at the rate rupees 10 per unit. Selling price 10 rupees दिया हुआ है. 10 lakhs and 12 lakhs less variable cost at the rate कितना है 6 ना rupees 6 per unit. It will be 6 lakhs 7 lakhs 20,000. So contribution 4 lakhs 80,000. Fixed cost you have been given 2 lakhs. So EBIT 2 lakhs 80,000 less interest at the rate. क्या दिया इंटरेस्ट का रेट 10% ना. डिबेंचर्स 10 lakhs at the rate 10%. So at the rate 10%. So 10 lakhs into 10%. So this will remain fixed 1 lakh 1 lakh. So EBT 1 lakh 80,000 less tax at the rate. Tax का rate क्या दिया है 35%. So at the rate 35%. So 35,000 and 180 into 35%. 63,000. So EAT 65,000 1,17,000. Number of shares कितना दिया है 100 each share दिया है. Total 10 lakhs. So how many number of shares 10,000. Write down number of equity shares 10 lakhs divided by 100. So 10,000 10,000. So EPS ये भी फॉर्मूला है कि EAT divided by number of shares 6.5 and 11.7. So one part we have calculated EPS. Now you have to also calculate operating leverage. So below this, whatever is the serial number, operating leverage, and write down the formula here itself: contribution upon EBIT. So calculate and tell me. Is it 2 and 1.71? So you can see जैसे जैसे sales turnover increase हो रहा है, operating risk कम हो रहा है, therefore operating leverage is reducing. And next, financial leverage. Financial leverage is calculated as EBIT upon EBT. So how much it is?
Is it 2 and 1.56? 1.55. Do not ask, we'll also calculate combined leverage. एग्जाम में जितना पूछा है उतना ही लिखना है, यहां पे जस्ट वी आर कैलकुलेटिंग. सो ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज. So it is 4 and 2.65. Written. Now we are supposed to comment on the behavior of operating and financial leverage in relation to increase. Below this, write down comment. Comment on behavior of operating leverage and financial leverage. Can I simply dictate instead of me writing? So write down. Can I dictate? First point लिखिए. Operating leverage falls from, पूरा वर्ड लिखना है ऑपरेटिंग लेवरेज, ओएल नहीं लिखना है, ठीक है. ऑपरेटिंग लेवरेज फॉल्स फ्रॉम, एवरीवन इज लुकिंग कि क्या लिखा है. आधे बच्चों ने तो ओएल लिखा ही रहेगा, मुझे पता है. एग्जाम में जस्ट अवॉइड बट देन, ओके. सो ऑपरेटिंग लेवरेज फॉल्स फ्रॉम 2 to 1.71. Operating leverage falls from 2, that is this 2, to 1.71. When sales increases, continue. I'll repeat again the statement. Operating leverage falls from 2 to 1.71 when sales increases from 1 lakh units to 1,20,000 units, comma, this is because as margin of safety sales increases, comma, business risk reduces, full stop. Margin of safety sales and, full stop, continue. Margin of safety sales and operating leverage are inversely related. Margin of safety sales and operating leverage are inversely related. Full stop. Second note. As sales increases from, second note, as, first note हमने operating leverage लिखा है. Now second note we have to write for financial leverage. Okay. So as sales increases from 1 lakh to 1,20,000 units, as sales increases from 1 lakh to 1,20,000 units, comma, financial leverage falls from 2 to 1.55. Financial leverage falls from 2 to 1.55. Continue, comma, this is because with the increase in sales,
with the increase in sales, EBIT rises. EBIT rises, thus resulting in reduction in financial risk. I'll repeat. This is because with increase in sales, EBIT rises, thus resulting in a reduction in financial risk. Full stop. बस इतना ही लिखना है. So this was 6th question. I'll just show exam question. This you can see almost same. ये May 2019 का है. उसके बाद 2 बार और similar question was been asked. And that time it was asked for 10 marks. This question was been asked for 10 marks. Nowadays it won't be asked for 10 marks. At the most 5 or 6 marks. Okay, exactly same. सिर्फ 1 lakh की जगह 2 lakhs है and 120 की जगह 2,40,000 units. Rest all the information almost is same. Slightly the numbers are different. Okay, इसलिए मैंने कहा कि similar question multiple times repeated है. Okay, so we won't be starting with the new question. We'll conclude for now. Tomorrow we won't be having FM lecture. Okay, so schedule will be informed by the sir. Okay, directly will be continuing on Saturday, day after tomorrow. Okay.